Yes, students, here we are going to discuss force on moving charge in a magnetic field. यहाँ पर हम जो फोर्स है एक मूविंग चार्ज पर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड क्या फोर्स एक्सपीरियंस होता है जिसको हम लॉरेंस फोर्स भी कहते हैं. नाउ इफ वी गो थ्रू इट, so force will be directly proportional to the magnetic field on the charge that we have taken a charge q. इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे और वो चार्ज मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v, तो वेलोसिटी v मूव कर रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में वो एक एंगल बना रहा है. हमने यहाँ अजम्पशन ये लेके चल रहे हैं कि y डायरेक्शन जो y एक्सिस है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन y है. वेलोसिटी जो है इस चार्ज की, चार्ज मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में जो कि इसके साथ में एक एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा. तो अब हम देखें कि इस पे फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v sin थीटा. मींस यहां पर हम देखें तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक ही होगा आपका v cos थीटा which is in the direction of magnetic field, but इसके परपेंडिकुलर में जो कंपोनेंट होगा that is v sin theta which will be responsible for the force. So force is directly proportional to the perpendicular from the magnetic field to the perpendicular of the magnetic field, जो कंपोनेंट है v sin theta. तो यहाँ पे हम इसको कलेक्टिवली देखें. So what we are getting here, F is directly proportional to BQV sin theta. Now, this force B is, we can say F is equal to K times BQV sin theta. यहाँ K की वैल्यू जो है it is equal to 1. मैग्नेटिक फील्ड को इस टाइप से डिफाइन किया गया है कि K की वैल्यू 1 है. So force which we are getting is on this charge which is moving with the velocity v in the direction from y axis making an angle theta. So finally we are having dqv sin theta. यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, dqv sin theta मिल रहा है. Now if we see q is a scalar quantity, velocity and magnetic field both are vector quantity. So if we see BV sin theta which gives you V cross B. So now the direction of the force which will be given by this relation, इस relation से हमको मिल रही है. कैसे? ये b भी sin थीटा वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहा है v क्रॉस b. और जब हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहां पर हम देखें कि वेलोसिटी जो है, दिस इज इफ वी अज्यूम दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज मूवमेंट, मींस वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, मोशन ऑफ द चार्ज, इसके परपेंडिकुलर में जो डायरेक्शन होगी उसमें फोर्स एक्ट करेगा. मींस if it is in this y direction and it is in this v velocity component in z direction, so इसके perpendicular में z axis है और z axis perpendicular में तो force जो हमको मिल रहा है, the force which is acting in this direction. So from this we come to understand the direction of the force. यहाँ से हमको direction of the force का पता लगता है जब हम vector product को देखते हैं. तो v cross b which is a vector product, और vector product में हमको पता है if we take these two which is in this direction, one in this direction and इसके perpendicular में यदि हम thumb को देखें तो thumb वाली डायरेक्शन जो है वो फोर्स को डिफाइन कर रही है. ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये वेलोसिटी कंपोनेंट की डायरेक्शन हो गई, और ये जो है जो फोर्स इस चार्ज पे, मूविंग चार्ज पर एक्ट कर रहा है, that will be given by F which will be perpendicular to these two axes, that is Z.
सो इस प्रकार से हम इसकी डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे हम देखें कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी बी वी साइन थीटा। अब यहाँ पर हम देखें कि ये जो थीटा जो एंगल है, इस थीटा एंगल को यदि हम 90 डिग्री कर दे, मतलब वेलोसिटी कंपोनेंट किस डायरेक्शन में आ गया, x डायरेक्शन में। इफ वी टेक थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, then sin 90 will be 1, means finally what we will have, BQV इतना फोर्स एक्ट करेगा इस मूविंग चार्ज पर। जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स जो कि z डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा है, बट मैक्सिमम फोर्स आपको मिलेगा। तो मैक्सिमम फोर्स व्हिच वी विल गेट, this will be BQV, which will be in perpendicular direction to both the components. One is magnetic field and another is velocity of the charge. Now if we take theta equal to 0, what will happen? Theta is equal to 0 means this velocity is in the direction of the magnetic field. Sin 0 is 0, so force will be given 0. Force is 0. Now force is 0 है, तो हम देखें फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो 0 नहीं हो सकता चार्ज का, एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। एक्सेलरेशन 0 means there is no change in velocity with respect to time. If there is no change in velocity with respect to time, तो फोर्स क्या होगा, 0। Similarly, if we take theta is equal to 180 degree, sin 180, again it is 0 and the force will be equal to 0. Means we can say the magnetic field and velocity both are parallel in this case. Both are moving in the same direction. In this, magnetic field and velocity anti-parallel. In both the cases, when the magnetic field and the movement of the charge is in the same direction, or it is parallel or anti-parallel, the force which is acting on the charge is going to be 0. यहाँ पे 0 हो जाएगा। So maximum force हमको क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। चार्ज मूविंग इन दिस direction which is perpendicular to the magnetic field, you will get the maximum force. Anti-parallel है and parallel है, we are getting the force which is going to be 0. Now similarly, if we talk about velocity is going to be 0, suppose, means this charge is in rest, and when the charge is in rest, charge is stationary. Charge is stationary. So when charge is stationary, what will happen? F velocity is 0, again the force is 0. So this way we can determine the magnetic field, the movement of the charge when it is kept a moving charge. A charge is kept in the magnetic field, it will experience a force, and that force will be perpendicular to these two components. One is magnetic field and another velocity. It will be given by the vector product that we have seen. So this way we can determine the magnetic field, and it is also known as Lorentz force. So by just understanding the vector product, we can determine the direction of the magnetic field. हमको वेक्टर प्रोडक्ट पता है v क्रॉस b का, दोनों एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, तो उसके परपेंडिकुलर में फोर्स एक्ट करेगा। So this way we can move with the magnetic field. Here we have discussed Lorentz force.